Right ahead of the Jammu and Kashmir election that's coming up this month, the BJP has just released its manifesto in the poll-bound Union Territory. It's going to be the first election in many years. Home Minister Amit Shah in Jammu today released the BJP's poll promises in the presence of senior local party leaders. Amit Shah said that post-Article 370's abrogation, J&K had gone from maximum terror to maximum tourism, and there's been an overall improvement in law and order. He also took many sharp pot shots at those he calls the separatist dynasties of Jammu and Kashmir. Take a look. क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे। मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे। टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे। जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है, इस पर पुनर्विचार करेंगे। फिर से 2 झंडे प्रस्तावित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? क्या आप 370 फिर से वापिस लाना चाहते हो? इसकी बात आपने करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता को अपील करना चाहता हूं, कहीं आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आए बगैर इनका मूल मकसद ध्यान से स्टडी कर लेना। उनका मूल मकसद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने वो एजेंडा को अपनी मौन सम्मति दी है। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, क्या इस देश में 2 राष्ट्र 2 झंडे 2 ध्वज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ आप सहमत हो या नहीं, वो बताइए। 370 के बारे में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सहमत हो या नहीं, वो बताइए। मित्रों, वो एजेंडा बहुत खतरनाक एजेंडा है। वो फिर से घाटी में और जम्मू में भय का राज प्रस्थापित करना चाहते हैं। आतंकवाद के माध्यम से भय कर 3 पीढ़ी तक शासन किया है। और मैं आज सबको बिना निसंकोच बताना चाहता हूं मित्रों कि मैं यहां घाटी में भी कई बार आया हूं, जम्मू में भी कई बार आया हूं। अब जो टेररिज्म के साथ है, जम्मू कश्मीर इनके साथ नहीं रहेगा। धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है। वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पहले डेमोक्रेसी 3 परिवारों में सीमित होकर रह गई थी। ना पंचायत चुनाव होते थे, ना तहसील पंचायतें बनती थी, ना जिला पंचायतें होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव कर पंचायती राज को बहाल करने का काम किया है और यहां लोकतंत्र को प्रस्थापित किया है। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है। वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर
जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से एपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। Here today's Gaurav Sawant is live with me on this. Gaurav, a truly crucial election coming up in Jammu and Kashmir. All eyes will be on how the election proceeds. The abrogation of Article 370, clearly the most monumental move that has been made in the context of J&K, and Amit Shah obviously referring to it in a very, very big way going forward, taking pot shots at the Abdullahs, Rahul Gandhi, the National Conference, etc. But what stood out for you, Gaurav, having spent so much time in J&K even after the Article 370 abrogation? What stands out for you in terms of what this Mission Kashmir is really going to look like from the BJP's side? Shiv, a couple of things. Jammu and Kashmir was all about fighting terrorism all along. The entire focus this time is encouraging tourism. Areas that you and I know that have been hotbed of terror. For example, Thana Mandi, south of Pir Panjal. Thana Mandi was at one point of time seen as liberated zone. And Thana Mandi is where Amit Shah talks about building a big tourism hub. And linking it to Pahalgam. So if you make Thana Mandi into a tourism hub south of Pir Panjal and then north of Pir Panjal you have Pahalgam, that will be big. He's talking about spending a lot of money on encouraging tourism. Tattoo ground in Srinagar, a bone of contention often. That tattoo grounds to have a massive amusement park. And look at the way Amit Shah describes it, that once a family goes into that tattoo ground, they will not come out for 3 days. It will be such a huge amusement park that government intends to make. And Shiv, that will truly be amazing, not just for the people of Jammu and Kashmir, but those from the rest of the country and the world who go to Jammu and Kashmir for tourism. When they go to an amusement park, there are many who take a vacation to go to amusement parks, whether it's in Hong Kong or in the United States of America or even in France. If you're talking about a huge amusement park, what a game changer that intends to be. Jammu and Kashmir to be developed as a center, not just for education. So education, healthcare and tourism. These are three areas where the government, where BJP claims they want to move big on. But ever since abrogation of Article 370 in 2019, this is an area that the government has tried to focus on. You and I have reported on counter-terror operations, both north and south of Pir Panjal. So yes, there will be more security forces to ensure this happens. But when Jammu and Kashmir is also seen as a place that has more education centers of IITs and IIMs, and what did Amit Shah say? There was a time when students from Jammu and Kashmir would go to the rest of the country to study. Now with the IIM in Jammu, there are people from the rest of the country coming to Jammu to study. So that is something that they want to encourage even more in Jammu and in Kashmir. Development of both parts. Shiv, what also stood out for me, often that's not spoken about, is rebuilding 1,000 temples in Jammu and Kashmir and ensure that prayers take place at these temples. Not many people remember the original indigenous population of Jammu and Kashmir. It was a huge Shaivite hub. This was where people went for education, Ma Sharda Peeth. This was where people went for healthcare centuries ago. What do people talk about? The only Muslim majority state, when it was a state, in Jammu and Kashmir. What Amit Shah is talking about, take it back to its original glory. Get back those 1,000 temples, ensure prayers take place. That is where it becomes a cosmopolitan hub. What is Omar Abdullah on the other hand talking about? He's talking about the targeting of Muslims that's taking place he spoke of Uttar Pradesh, where madrasas are being targeted, where he claimed madrasas and mosques are being targeted, where Muslim shops and households are facing bulldozer, where he's also talking about in Assam, Muslims are being insulted. So there is this subtle appealing to their vote banks. Omar Abdullah is doing it in one place, and Amit Shah very clearly is talking about, we will once again ensure those 1,000 temples come up in Jammu and in Kashmir. Okay, the temples, minimum terrorism, maximum tourism.
the big calling card of the BJP in this particular manifesto going forward. Gaurav, thanks for that comprehensive spotlight on what the big thrust is for the BJP in its manifesto heading into this election. And just to summarize for our viewers some of the big announcements and promises that the BJP is making. The first one that Gaurav just told us about, the BJP says it will rebuild temples destroyed by terrorists. Number 2, will issue white paper on killings in Jammu and Kashmir since 1990. Number 3, Rajouri to be developed for tourism. Rajouri, remember, is south of the Pir Panjal, south of the Kashmir Valley, a place that's been ignored for a long time. Absolutely stunning. Number 4, beautification of the Dal Lake in Srinagar. Work on this has already started. Number 5, as Gaurav said, an amusement park to be built in Srinagar for an even bigger boost to tourism. Number 6, riverfront to be built on the Jammu Tavi. The Tavi is the river that flows through Jammu, and to develop it as a tourist hub as well. Number 7, metro train services in Jammu and Srinagar. 5 lakh job opportunities to boost employment. 3,000 rupee allowance to students. Loans to women's self-help groups to be waived off. These are just some of the salient promises that have been made.